Good evening, sir. Sir, good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग। मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. हाँ आ रहा है सर। ओके, स्टार्ट इन 2 minutes। गुड इवनिंग सुरेश सर। ओके, शेयरिंग माय स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है अभी? हेलो, स्क्रीन हाँ विजिबल है? विजिबल विजिबल विजिबल। ओके, थैंक यू। ओके, so before starting today's session, let me add some reference of this structure. जैसे कि last time we have seen there was a sharp move in Bank Nifty. So I would like to add some background to this, and then we will switch to Nifty and Bank Nifty structure. So let me build some background of two lines theory, which will help us to understand it better. I would like to request if there are any queries, we will address those queries towards the end of this session. Okay. I'll first cover different patterns which we may find or identify during market movements in index, Nifty or Bank Nifty, and in some of the stocks. So after that, we'll be checking Nifty structure, Bank Nifty structure, and at the last, we'll be addressing the queries. So as per two lines theory, market is always in uh, three different potentials or three different moods. So one is bullish mood, one is sideways mood, and the last one is bearish mood.
And every type of trend, like these three type of trends are okay, that gives us some clues of the direction of the distance, and uh, index is scripted to execute their structures by applying the length of the moves, the direction of the moves, the distance of the moves, and the speed. So majorly it is like physics formula. So if we talk about physics formula, it is like distance is equal to speed into time. This, if you understand this concept, it is directly applied in the market, and it is going to help us to understand different structures which are deployed during market hours, and we can definitely know the background of, or by knowing some portion of this structure, we can identify what is going to happen in the future. Okay, so this is an important part of two lines theory. What we are learning right now is a logic behind two lines, how two lines are formed, how the price gets trapped in two lines. So when price get trapped in two lines, we normally showcase that phase in this format, bluish format. And when it breaks one of the boundary, suppose upper boundary is broken, then price enters into the bullish trend. And then if we place this box with the same distance on top of this two times, then this can be referred as trending bullish move, or upside or upward bullish move, upward move. Similarly, if downside boundary is challenged or broken and price closes below this, then price travels for two times of the distance, same distance. So this distance is same in all the three cases. It is called as a bearish move. And this is how the one complete phase is, this is a template of one complete phase. So sometimes market price gets stuck in the sideways and breaks up, and this completes one complete cycle. Sometimes just a moment. Sometimes price gets trapped in this and completes the move, and this also considered as an one complete cycle. So sideways and then trending move. So normally, if we look into the chart, price is always followed by PZ, PZ followed by TZ, TZ followed by PZ. Likewise, what is TZ, PZ? This blue patch have tested my patience for lot many years. It is like when I tested Bank Nifty for 1 year and 8 months continuously for 6 hours and 15 minutes a day. So every day I have taken one trade with one single lot, and I waited for either price will hit stop loss or take profit, and I keep doing this for 1 year and 8 months. And that, so I renamed this, after that I renamed this as a patience zone. So it is testing your patience. And once patience zone is broken, the price runs in a trending mode. So it is called as a trending zone. Okay. So that is TZ. So TZ can be
bullish trending zone or upside trending zone and bearish trending zone. Okay, so there can be two different TZ. So if you look into if you zoom out on the chart will look like this. Price will go sideways, then it will move for 2x or 3x. Again sideways, it will move for 2x or 3x. Again for sometime sideways, then again another PZ. So price is actually jumping from one PZ to another PZ. And you can clearly see these things on chart. Okay. So basically the price has some motive. So there is like a script or there is some target given to the price. Suppose in this case, the target was from starting journey from point A and reaching to point B. This was the target given to the price. And then price has taken 1 PZ, 2, 3, 4, 5, 6 PZs to reach to the target. And this can be decided runtime. So that means if the price got stuck in this and it will run towards this, at this point whether we need a standard PZ or the manipulated one will be decided by price by considering the participations. What are the recent participations available in the market? Okay, I'll also add some light on this. So that says if this is a standard PZ, if we break this component into different parts, then it looks like this. So this PZ also has some internal mechanism. The formation of PZ can be identified by identifying the nature of the nature of the movement of the price is happening inside this. In today's session, I am not going to cover this. I'll just give you a one-liner about this. What normally happens? Price is suppose coming from some point. Suddenly someone is controlling that price. And then price takes an U-turn. And again price is controlled. So likewise price is controlled at the bottom boundary. Price is also controlled at the upper boundary. And then it goes into the snaky mode, or it goes into a mode where price has no clue which side it will travel, and it gets trapped within these two boundaries. So if you see, so price was suppose an vehicle moving towards some direction, the red signal stops the vehicle, orange signal is ready for the next phase in the price. That means these two areas where price gets stuck on the bottom and then gets stuck at the top, whichever points we meet first, this point or this point, this both the control points, until and unless we don't get these control points, price is not we do not consider that price is trapped in these two boundaries. Once we get these two dents, we can say price may get trapped in this point, and then after B and C phase, price again takes an U-turn, but price approaches to the boundary, one of the boundary upside or downside, and it does not cross the boundary. If this happens, then we are entering into the C phase, which is like just the PZ formation or the price is locked in this range. And once price is locked in this range, the price is going to do some time pass or do some rest in this phase. So suppose this is 30% of the time price has consumed, price is going to spend another 60% of the time in this two boundaries. That is what happens to the price. And then price gets stuck and price has no motive to get out of this until and unless the distance, this time, until and unless the time allocated for the price to get trapped in this ranges is over. So normally if we are observing 5 minutes time frame, it gets stuck for approximately 3 to 4 hours in this area. If we are observing 15 minutes,
then it gets trapped for 1 to 5 days in this area. If we are observing monthly time frame, that is 1 hour time frame, monthly means 1 hour time frame, monthly view, then price get trapped in this range for 2 to 3 weeks. Likewise, ranges also changes. Ranges are also changing according to the timeline. For 5 minutes, it gets stuck in 292 points, right? In 15 minutes, if you are observing this in 15 minutes, we will get to see the range is 750. And I'm talking about Bank Nifty. And if we are suppose observing in 1 hour time frame, we can see the price is getting stuck in 2160 range. So the boundaries shows, just a moment. Okay. So the boundaries shows the control is in FI's hand. And once they decide to break these boundaries with certain intention, then and only then price start moving towards the destination. So sometimes destination is towards the motive, or sometimes it is against the motive. So sometimes they also deploy some traps. And now we are going to understand those traps. Okay. I'm not expecting everyone will understand this PZ with this small 15 or 20 minutes of overview. We do conduct around 3 to 4 days. We do spend 3 to 4 days to understand this topic. Okay. Today I want to address something, and for that we need some background. That's the reason I'm explaining this. Okay. So that means if we spend good time with the price, we can clearly identify when the price is getting control and when the price gets locked in this boundary, and after that there will not be movement, too much movement, and it acts like funnel. It acts like signals. So if you look into the signals, green means the price can freely move within this range, and then over the period people lose interest because they are getting trapped upside, downside, all the ways, and the movements gets very narrowed. And with when we say it gets narrowed, it is nothing but we can observe the funnel in the price. So there will be a pressure building and price is going nowhere. Participants are also not interested. And likewise, we enter into an phase where the saturation is very high. So the red tone of the price means price is highly stressed. Here, price can at least freely move within the boundaries, but here it is highly stressed. And then there is a phase occurs where price is ready to challenge the boundary and it breaks the boundary. And the way it breaks the boundary decides the next level of move in the price, whether it is upside or downside. Okay. So we are going to cover that. So bullish. So if you break that structure, now you can see. So what we have seen in the previous slide, these three boxes looks like this. Like this, 1 2 3. And if we know the nature of this, we can arrange these boxes in different structure. So this is an usual trending bullish move, looks like this. In terms of boxes, I am going to show this on slides. I'll also show this on chart how it looks. Okay, this is bearish box and this is PZ. So if you look into the distance, so distance is this. Distance is this. It is always a same distance, and this distance is directly proportional to time frame. So the PZ height or the price gets trapped in certain distance is always same for as per time frame. Same means if we are stuck in 5 minutes time frame, the distance will be 292. If we are stuck, if we can observe the nature of the price in 15 minutes, we can see price is getting stuck in 750 and it is clearly visible with that lens. Okay. So that means for PZ, the distance, suppose it is D, even for trending mode, the distance is D.
So what is difference between PZ and TZ? So in trending mode, normally we get two boxes with the same distance. That means doubles the distance. Two boxes with the same distance. But PZ normally covers a distance equal to 1x. If this is 1x or this PZ distance is suppose 1x, then once we break the boundary, suppose upper boundary is broken and we are moving upside, then two green boxes. These two green boxes is nothing but price is covering a distance. So from this point, this boundary to this point is 1x. From this boundary to this, from the 1x to this boundary is 2x. So likewise, we can see the price covers a distance of 2x if we crosses any of the boundary. Okay. So that means if you identify a normal movement where distance is fixed and time is less. So if time taken is bigger to cover the same distance, you can see the sluggish nature in the price, right? And this is not sluggish, this is trending nature. That means price starting from one point and reaching directly to the target. Here price is not reaching towards the target, it is taking some more rest and deciding which side the target should be. Okay. So that means this is usual for bullish trending, this is usual for bearish trending. But suppose you can see the price is dancing within two boundaries and the distance covered is only, the time covered is less. Okay. Bullish or bearish time 1/3 hota hai PZ ka. Okay, I'll come to that point. Coming to that point only. So that means the timing which is covered for creating a sideways move. This is sideways, or I'll also name it as an sluggish move. If the time taken is this, then what is unusual for sluggish move? Lesser time taken. So this time taken is lesser than the usual time taken by the price to spend in the PZ. So that means it is not 1/3. That means to cover this distance, suppose price is taking X amount of time, imagine this, then this total distance can be 4x. So in total, it is 5x of the distance. That means, so 4x amount of time is spent in creating sideways move, and within next 1x, price is going to cover the trending distance. Likewise, 5, if you consider the entire price action, I'll again go back. So if you consider this entire price action, and if we break this in 5 parts, then you will see 1, 2, 3, 4, and then this is 5. So 1, 2, 3, 4, and this 5. So the price goes in the trending mode in the 5th part, and it goes into the sideways mode in the 4th part. So that means if suppose intraday means 5 minutes time frame, and we are going to build a view for one complete day. We are using 5 minutes time frame. That means total 375 candles. That means if we divide these 375 candles by 5 portions, 5×7 = 35 आणि 5×5 = 25. You can see approximately 75 minutes. So for 75, 75, 75, you can observe. So normally, if we talk about these manipulations, the price is not manipulated with standard time frame. It is like our closing. We can observe price closing price by
candle closing of 5 minutes, 15 minutes, 1 hour. But the algos, FIS algos, normally select some random numbers. So instead of 60 minutes, they may sometimes covers 55 minutes of line of action, sometimes 75. So their action limits, their actions are cut with these random numbers. They are not the standard numbers like 1 hour, 15 minutes likewise. Bullish or bearish? 75 candles of 5 minutes होता है. 5 minutes में 75. Okay. So these 375 candles are nothing but 1 minute candle, and definitely, as you said, if we divide this by 5, we get total 75 candles. And here I have not discussed about 75 candles, but 75 minutes. So if we divide this by 5, so approximately 15 candles, right? 15 candles they manipulate, and they close this the fragment of their action is, instead of 60 minutes, it can range between 55 to 75 minutes. तो उनका एक डब्बा 75 का भी हो सकता है, इसीलिए इट कैन नॉट डायरेक्टली मैप टू आवर प्राइस एक्शन. उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए वैसे they have done this, they have added this challenge in the price. Okay, so उससे क्या होता है, what is going to happen? So then you just need to understand, हम लोग जिसे what people are saying index is manipulated. 99% participant do not aware, or they are not aware how manipulation is executed. But with two line theory, we have clear understanding. Distance is equal to time into speed. Okay, so these are three direct parameters which if we used wisely, if they are using wisely, they can manipulate the price. And there is, on top of this, there is an additional parameter which is behavior. Behavior is nothing but what is expected from price. If that expectation is not matching, then they also manipulate these expectations. And how they manipulate expectation, one of the example we are currently watching in live market. Currently the Nifty and Bank Nifty structure is deploying one of these scenarios, and I'll explain this. So that means distance. So if distance is this, how can we manipulate the distance? So in trending mode, the distance calculated based on this is 1x, then this is 2x. Sometimes price runs for 3x or 4x as well. तो ये 3x 4x का पावर आता कहाँ से प्राइस में? How price can run for 3x and 4x instead of 2x? So there are some additional parameters which can drive price to 3x or 4x. But the manipulation to change this distance is visible in the PZ or in the journey of this framework. What was the framework? What was the one template? The price goes sideways and it may run twice the distance, upside or downside. You know that box, right? जहाँ पे I have shown both the upside and downside moves. So the nature of the price between this in this journey shows. So that nature of the behavior or expected behavior shows whether price is going to travel for 3x, 4x, or the target is getting over at only 2x. So that also says if I reduce the time, then the speed will be increased. So suppose I want to cover a same distance. Suppose I want to cover a same distance in lesser time. Then you can see the speed is sharp. The standard speed is this. Then standard time is this. Suppose I have forced price to take additional time. Then
you can see the same distance will be covered, but the price will travel in a sluggish manner towards the distance, right? So this says if you tweak one parameter, it affects the rest two parameters. डिस्टेंस के साथ हमने कुछ किया तो टाइम एंड स्पीड भी चेंज हो सकता है. तो इफ वी कंबाइन ऑल दिस, अगर इसको नॉर्मलाइज कर दे, इफ वी even go back or reverse engineer this, then what I should claim, this this are exactly same boxes which takes, और this is a सेल. जैसे हमारे बॉडी का सेल होता है, मार्केट का एक सेल होता है जिसमें एक डिस्टेंस होता है, एक टाइम होता है, एंड देन देयर इज अ स्पीड. तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ वर्जन ऑफ दिस. अगर मैंने बोला बुलिश और मैंने इफ आई एम टेकिंग स्टैंडर्ड टाइम ये है एंड इफ आई एम टेकिंग एडिशनल टाइम, सो द स्टैंडर्ड टाइम प्लस सम डेल्टा, some additional time if I have taken, I have given to the price, then ये bullish trend से ये sideways हो गया है, right? So ultimately डब्बा एक ही है. उसी डब्बे को bearish भी बनाया जा सकता है. We can make it bearish, we can make it bullish, we can make it sideways by manipulating distance, time and speed. तो ये अगर standard है, so for sluggish mode this is standard. For trending mode this is standard. Sluggish के लिए this is unusual. This is unusual because it is happening in lesser time, right? Yes, we can identify this manipulation. वही उसी के लिए मैं ये बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको, हाउ टू आइडेंटिफाई. एंड देर आर सर्टन लेवल ऑफ कंट्रोल, सर्टन लेवल ऑफ एक्शंस हैपनिंग एट द कंट्रोल पॉइंट दैट कैन गिव अस एन क्लू. सो बियरिश के लिए दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड. बियरिश अगर फास्ट मूव देना है, so then that means time is manipulated, so speed will increase. That is something unusual. Or instead of getting bearish sharp, ऐसे sharp bearish के जगह पे sluggish way में it is coming down, then this is also unusual. It is taking too much time, right? So this says these manipulations can be clearly observed if we know three parameters and their lengths and dimensions. Okay, so I have shown you now what are the possibilities, standard these are the standard behaviors. अभी हम वो लीगो जैसा गेम खेलते हैं ना, उस गेम की तरह वी नीड टू अरेंज दिस. इफ आई पुट दिस बॉक्स, उसके टॉप पे मैंने ये बॉक्स रख दिया दो बार, देन हाउ इट विल लुक लाइक, इट विल लुक लाइक one blue patch, and after breaking that, price is moving for 2 times of the distance, 2x. That means this is complete bull move. हो गया. Similarly, if I put these boxes downside, then bearish, and then this covers a complete face. So if I want to check the possibilities, all the possibilities, then these are all the possibilities in the price. क्या क्या possibilities है? So usual PZ looks like it consumes, as I said, 4 times of the distance, 4 times of the time which standard move covers. स्टैंडर्ड मूव अगर इतना टाइम ले रहा है तो इट कवर्स 4 times ऑफ द टाइम. ठीक है, बट इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस. तो दिस मीन्स दिस इज अ स्टैंडर्ड फेस. दिस इज अनयूजुअल. अगर पीजेड इज टेकिंग लेसर टाइम, दिस इज अनयूजुअल. पीजेड इज टेकन मोर टाइम than normal usual time. Suppose 2 times it has taken total time, मतलब 2 दिन पीजेड में ही है, then price has a capacity to move to 4x as well. 3x या 4x भी जा सकता है, एक ही साथ वो दोनों मूव दे देगा. ठीक है, लाइकवाइज इवन दिस ट्रेंडिंग मोड 2x का डिस्टेंस कवर करने में प्राइस कैन समटाइम्स डू टाइम पास. प्राइस कैन डू दिस नाटक. प्राइस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस and it is going to move snaky form और यहां तक पहुंच जाएगा. That is also price can do. Okay,
लास्ट वाला तो साइडवेज के बाद साइडवेज ही लग रहा है, विच दिस वन, साइडवेज के बाद साइडवेज, राइट? सी, this is a variation. What can happen? So after this, either this can happen, or this can happen, or this can happen, or this can happen. ऐसे है, मतलब इसके बाद ये हो सकता है. If you observe this, this can happen, this can happen. There can be different combinations. और कितने combinations होते हैं? We have clearly identified those. So now we got an clarity कि if PZ is like this, with standard PZ we get standard outcome. With unusual PZ we get unusual outcome. And then we need to combine this to form complete setup. वो कैसे होता है? Let me take you to the combinations. Few combinations, few known combinations. Okay. So known combinations क्या है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे, see, there is a PZ. So if you observe this PZ, chat में बोलना, मुझे unmute मत करना, chat में बोलना. If this is suppose taking standard time, can you mark this as an unusual? If this is usual, then this is unusual PZ, right? Yes or no? Chat में yes or no बोलना, right? And suppose if this is standard distance, standard time taken, इसका मतलब प्राइस ऐसे ऐसे भाग रहा है. And if you can see the distance is same, but time taken is lesser than this, so this is also unusual. So what I have shown, I can see someone is confused, and I'll go back again. See, there are some standard behaviors. So the sideways move, when we will say the move is sideways, or when we can tag this is a standard sideways move, when the distance is same, but the time taken is approximately 4 times of the time taken by normal up move, right? The distance is here as well same. If this is normal move, then this can be called as an sharp move, and this can be called as an sluggish move, right? So that is the difference, right? So that means when we say market is in sideways, for sideways this is standard template. For breakout, this is standard template. But if breakout is happening in this manner, this is something unusual, and that means this can be a kind of trapping side, and the actual move can happen on the opposite side, or this has some other price action, or there is some other plan hidden in this price action. Okay, so I am taking you to that level of understanding. So I have shown you some example. Now what I am taking a PZ, manipulating it, and I have reduced the time from that PZ, and then instead of this, I want to create a sharp move. So I am taking half portion of this. That means same distance, I have given a target to price, cover this distance in half of the standard time. So that means it can cover a sharp fall, and then it is again come back to PZ, right? If this happens, then price will run for this distance. The moment price is crossing this point, price will run for these 3 boxes, and no one can stop price from reaching to this point. Ye hoga. So what it says, there is a control point. Price is getting control at this point. Then price is getting control at this point for certain time, and suddenly price is breaking one of the boundary and exactly reaching to 1x, and instead of crossing 1x, it is taking U-turn,
and again it is coming back to the boundary. If this happens, if this is first checkpoint, if this is second checkpoint, price has not spent good amount of time, third checkpoint. So standard time ने spend किया price ने, and it came out. Fourth checkpoint is price is taking, someone is taking control at minus 1x, exactly at 1x, exactly at 1x. And then price has taken U-turn, yes, fifth checkpoint, and the price has crossed this boundary. If price is crossing this boundary, then from this point to this point, price can definitely travel. So this says the price is manipulated. तो आप लोगों ने बहुत बार ऐसे देखा रहेगा कि आपने ट्रेड लिया बाय कंसिडरिंग यहां से यहां जाने वाला है, बट प्राइस फर्स्ट टेक्स योर स्टॉप लॉस एंड देन इट गोज इन दिस डायरेक्शन. मतलब वो उधर ही जा रहा है लेकिन अपना स्टॉप लॉस लेके जा रहा है. तो इसको हम बोलते हैं इन स्टैंडर्ड मार्केट लैंग्वेज शॉर्ट्स बिल्ड, शॉर्ट्स कवर्ड, एंड प्राइस इज नाउ moving towards the same direction, same distance, which you might be aware before, but it has created this runtime trap. दूसरा क्या होता है, ऐसा हो सकता है. I'll directly jump to third point यहाँ पे, and then I'll come to this second. So price is spending sometimes in sideways. It looks like standard sideways क्योंकि price क्या पहले ही price is taking out, price is coming out of this boundary and dance करते करते sluggish करते करते. So we were expecting this, but price starts dancing and taking too much time to reach 2x distance. But the moment it is reaching 2x distance, it is taking a sharp fall towards this boundary. So checkpoint क्या है? First checkpoint, price started moving up. It has crossed the boundary. Second checkpoint done. It has taken limited fall. Limited fall मतलब क्या है? This distance is exactly equal to the distance of the PZ. Again price is moving up. Again taking limited fall. ऐसे करते करते it is reaching to 2x. And every time it is taking a U-turn, the distance is exactly similar to this. So that means this checkpoint done, this checkpoint done. Price is breaking early, this PZ breaking early and entering into the trending mode. And in trending mode, third checkpoint is instead of moving sharp or standard, it is moving sluggish by taking a reversal of D distance. This is the same distance. So fourth checkpoint at 1x, it is also crossing 1x, not taking halt at 1x, and similarly it is reaching to 2x. So this first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eight checkpoints done. And if price is at 2x, by performing this much activities, if it is reaching 2x, it is going to take a fall up to this boundary. And then from this point, it is going to cover the normal standard move. This can also be an manipulation. Okay? तो प्राइस के साथ ऐसे भी होता है. अब प्राइस के साथ और क्या होता है, प्राइस के साथ क्या हो सकता है? समटाइम्स प्राइस परफॉर्म्स सिमिलर एक्शन. प्राइस गोज आउट, अगेन कम बैक, एंड द डिस्टेंस इज सेम. ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, this distance is exactly same to this distance. Okay, and then price started traveling to, suppose it wants to go to 2x, but at 1x someone is forcefully controlling price and then pushing price down, then it comes back to the bottom of the boundary of PZ. So the nature is same, but instead of reacting to 2x, it is reacting to 1x and coming down to this boundary. Same thing will happen. Only thing is जो 2x में होने वाला था, after this sharp reversal, upper boundary पे जो हो रहा था, upper boundary of PZ, that is going to happen to the bottom boundary of PZ. So this can also happen. So these are some unusual actions are happening in the price, and I am going to show you this behavior in chart. Okay, so I can show you ये behavior, ये तीनों का अलग अलग example I'll show you. So that means bullish is this, sideways is this, bearish is this, and if we combine all this together, what we can see, ऐसे भी हो सकता है
ऐसे भी हो सकता है एंड शार्प भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्राइस के साथ. So there are a lot of many manipulations, and if we combine all this together, we get this standard template. I have also explained कि manipulation होता कैसे है. Okay, price started running to certain point. So this is a chart. If you go into 3rd September 2019, when I created this slide, 3rd September 2019, 11:30, price was falling. Someone taken in control and pushed price upside, and then again someone taken in control at this point and pushed price downside. So this PZ boundary upside, PZ boundary downside has formed. We got two control points, M1 and M2. M1 and M2 is nothing but control points at minor time frame. Minor is 5 minutes. Okay, that is minor, secondary, and primary. Secondary is 750 and primary is 2160. Okay, hourly, whatever we are going to observe hourly. And now after this point, prices will be manipulated or controlled, kept within these boundaries. So you can see there are multiple ups and downs, sluggish ups and downs. And at some point, it is challenging the boundary. The moment it is challenging the boundary, someone is again pushing it inside. So this who is challenging the boundary can be either retailer or FIs themselves. Why? Because if they see no one is interested, then they create this false narrative and they are showing us we are breaking the boundary. And then people will enter by considering जनरल नॉलेज. दे अप्लाई जनरल नॉलेज. क्या होता है डबल बॉटम, डबल टॉप, बहुत कुछ लगाते हैं. और क्या लगाते हैं? Support is broken 2 times, it is tested and support is broken, and they get jump into this. They FIs do deploy some impulses at the boundaries, and these impulses are nothing but pushes us to take some decision. तो impulse पे कभी भी decision नहीं लेना. अभी yesterday Friday भी एक impulsive move आया था. I have stopped everyone from taking decisions, and there are some valid reasons I am going to give you why we are not taking decisions in impulse. Let the market get settled, and then whatever may be profit or loss, we are going to book it. But we are not going to take any interest in the market when market is pulling us, asking us to take an action. We will have our own control on the price, and why taking the decision in impulses is not right. I'm going to give you some hints on that. Okay, so price is again control. Someone is pushing price back. Again, boundary is challenge. Now this time they are keeping price outside the boundary. But if you measure this was nothing but 0.33 distance. Okay, then price kept hovering or kept control within this 0.33, and then price has broken this point. When the price has broken this point, if you measure this distance, and when the price has broken this point, from this point to this point, price has covered a distance. Again, from this point to this point, price has covered or had done some movement. And this is nothing but exactly 2x. The distance is exactly 2x. Exact, not a single point here and there, exact 2x. The price is controlled again at 2x and pushed back to the boundary. Because of this additional manipulation, it has pushed back to the boundary. वो हुआ है. ठीक है. And if you go ahead, you can see this was the price action happened. And then price will be waiting for next level of PZ. As I said, after every PZ, there is TZ, again there is PZ. So we got new M1, we will get another M2, and then price will follow. And likewise, we can see different structures in the price. So from sideways to bullish, sideways to standard bearish, these are standard one. Bullish primary, this is bullish primary. If you only consider bullish move, then bullish primary can happen. This is mid of secondary. What is this mid of secondary? I'll show you on chart. This is nothing but plus 1x minus 2x. Can you see plus 1x minus 2x? Minus 1x plus 2x. There can also be minus 1x and plus 1x. And standard bearish also. Mid of secondary and standard bearish. If we combine all this, ऐसे होता है. So as I said, from P1 to P2 price traveling like this. इसका मतलब if I want to cover a distance of 2160, suppose I want to cover a distance of 2160. This is 2160 from this point to this point. Then price will first go sideways of 750. That means
this box is 750. This can be also 750. This can be also 750. With three 750 boxes, we are covering 2160. Within this 750 box, you can see 292 and break of 292. 292 and break of 292. 292 and break of 292. ऐसे हो सकता है. Okay. So if this distance is itself 750, then we can get 292 at the base and breaking. If we are getting this PZ in the mid, then price cannot go and cross this 750 boundary, and then we can get partial movement. So sometimes we see 292 के बाद 1% हो रहा है मूव, या 750 नहीं हो रहा है, 430 हो रहा है, 1% हो रहा है. दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. ओके, so that also takes us, bearish side may be similar, and then this is what I have explained to you in terms of speed. I'm not going to cover this. I'll jump directly to this slide. So after learning all this, what we are getting as an final outcome is nothing but this. So this is standard behavior. This is standard bullish, standard bearish. This is manipulated 1x, manipulated 1x bullish, 1x bearish. This is where price gets stuck in the sideways, run for 1x, again come back and runs for 3x. This is where we get sideways and price gets manipulated at 1x, runs for 2x. The fall from this point is 2x, which is exactly matching to the boundary, and it run for 3x. इसका ही mirror नीचे है. The mirror of this is downside. And so with this understanding, we were expecting this from Bank Nifty. Okay. We were expecting this from Bank Nifty, but then we may get this from Bank Nifty now, because instead of controlling price at minus 2x, someone might have control, or they are planning to control price at minus 1x. What is this? I am going to show this show you this on chart. So what I am going to show you on chart are three things now. ये जो मैंने बोला था, ये these three things. ये पहले मैं तीनों दिखा देता हूँ samples, all the threes, and then I'll come back to mirror of this, which is currently happening in Bank Nifty. How much time done? 1 घंटा हो गया ना? Good. Okay. So let me take you to the structures. So Twitter पे I have posted sometimes. So ready-made example we will get from Twitter. Not this one. See. So sideways of 0.17, exactly taken sharp fall and sharp reversal. Exact distance, जितना distance इसमें था उतना ही distance लिया. The price has to cover to this point. और क्या हुआ प्राइस के, हाँ, क्या हुआ प्राइस में? This is what has happened to the price. And you see the sharp move till this, and with this additional manipulation, मतलब प्राइस यहाँ से यहाँ जाने के लिए स्टार्ट कर दिया था, बट देन एडिशनल मैनिपुलेशन हैज हैपेंड एंड इंस्टेड ऑफ 2x प्राइस वेंट फॉर 3x, तो इधर तक चला गया. So for, but you can see the moment it is crossing. So what I said, we need a sideways move getting controlled. So sideways was controlled, and if this is the distance, price has challenged this boundary and someone exactly stopped the price at exactly same distance, right? This is 0.17 again,
and the moment price is crossing this, it should go to this. But additionally, someone again manipulated, again tested this boundary, but it is still respecting the boundary. So that means this time it is going to happen. And this time price has crossed, and you can see sharp candles. And this resembles to this part. राहिलं ते करायचं. Okay. Now I am going to address 3x गया है. Yes, 3x गया. Now I'm going to address this one, 4 June. This is also well-known structure. So 17.17 में क्या है, बहुत कम distance था वो price में. That was very less distance. If you look into this 4 June, this trade where I have got 7,000 points. See, this was Bank Nifty's chart. And this distance. So if you go on 17th of Jan, price, you can see price is crossing 2160, then coming 2160 limited. Crossing 2160, not come back to 2160 because EMA is not allowing price to come below this. But again, price is elevated and coming to 2160 downside. Again, extended, coming to 160 downside. Now at this point, what you can see, the price has slightly crossed the 1x boundary. So that means it has a plan to go to 2x, right? Slightly crossed, but it has came down limited. Again, it went beyond 2160, limited to 160. So that says the price has a plan to go to this point. And suddenly you can see this is the day before the gap up. Gap up exactly happened at this point, and then price has started falling down exactly till this point. And this distance is nothing but this D is 2D, nothing but same to this distance. So what we are observing now is this pattern. This pattern, right? The price goes beyond the boundary, limited coming down, boundary, limited coming down, and reaching to this point, and then sharp fall. And then again it is going for 3 times. Just a moment. Okay. So the chart looks like this. And if you measure from this point to this point where price has taken an halt, this is exactly 3x the distance. Okay. Now, so similarly, we were expecting current structure in Bank Nifty. Now we will look into this patch, the mirror of this. So to see this structure is for bullish. So ये अगर bullish के लिए है, bearish के लिए कैसे दिखेगा ये? एक मिनट, हैंग हो गया. ऐसे दिखेगा, right? And color, there will be a difference in color. So after this green, this will be red, this will be green, green, red, 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 right? ऐसे ही दिखेगा ना mirror. So that means we are now observing this patch. This one. So mirror of this. So we were expecting this in price, but price has done this. That is what I can sense. This is happening in Bank Nifty. Nifty में अभी तक यही चल रहा है. Bank Nifty में शायद ये हो सकता है. अब वो कैसे? Let me mark this. So as I said, we want to observe hourly. एक कैंडल की वजह से we were not able to catch the complete move, but that is okay. We failed in understanding that. अब
failed का मतलब क्या है? We are currently sitting in a trade and we need to take some actions. So I'll show you now. We are now jumping on Bank Nifty structure, and I'll show you step by step what could be the line of action and why we can only perform. We can have only that line of action. Okay. So this is okay. I'll not use this. In meanwhile, in chat box, do not speak. In chat box, just let me know if you are clear with the background understanding which I have created by showing you that part of the presentation. Have you got a clarity? Just let me know. Thanks. Okay. So see, what we were expecting from price. Thank you for this response. We were expecting, so this is 2160 sideways, right? So that means price is getting controlled in 2160, and if it is crossing the boundary without spending a time, that means now what is the second? So first checkpoint, I'll go checkpoint by checkpoint. Okay. So first checkpoint was this is first checkpoint. Someone price was traveling to certain distance, someone controlled the price. Someone throw the price on the opposite side. Again, someone controlled the price at this point, push back. Then price started challenging the boundary, it came out of the boundary. At this point, someone again pushed it back. And this distance is nothing but equal to, if I measure this distance, this is almost equal to 2160. I'll mark this as an bullish क्योंकि ये ऊपर की तरफ गया, right? So that means this checkpoint done, price again taking reversal, this checkpoint done. Now, what are the next checkpoints? Next line of action. So I will mark 1x and 2x. This is 1x. This is 2x. So this 1x. So we are expecting downside. So I'm marking this. Okay, this is expectation. So I'm marking this yellow. This is not the actual move. This is just an expectation. So this side price will perform an action. So that means if I, so from this point, again price will come down, right? And again it is going to take a reversal. So this was the reversal. So this reversal, if I mark this point, if I mark this 1x boundary, what I can see in the price, see, it has crossed 1x. Right? So that means it has crossed 1x. If it has crossed 1x, that means the plan in the price is to come down because it has already crossed 1x. So that's the reason we are expecting the same fall will continue to 2x. But if you guys remember, when I said something unusual has happened at this point or at this point, across all the instruments, and because of that some runtime, some structure might change, or we don't have clue what has changed during that period. So if we go back to previous video or last week's video or the week before that, we have addressed this change, and we could not understand, or I could not understand, if they have changed their plan. Instead of going towards 2x, they are ready to execute this at 1x. We don't know reason why they want to execute this at this point in Bank Nifty. In Nifty, they are still not able to reach 1x. They are still at this point and the price has taken reversal. So that means the Nifty reversal is not happening at 1x, but Bank Nifty reversal looks like it is happening at 1x. So that means if this sharp fall has happened and price has taken some additional effort to go up,
So that means there is a noise either on upside or downside. And to reduce that noise, we have requested some information from higher time frame. So when we go to higher time frame, we can see this closing clearly shows it is below 1x. And that means if we ignore that candle, what we can see, the price is within 2160 only. So if we align this properly, it does not look like that we have crossed about 2160. So that means even at this point, as per our expectation, price supposed to fall and extend below this. And that's the reason we have closed our trade near about this point, and we waited for the reversal point or control point. What is the control point? This structure is following 1080, half of 2160 structure as well. So then we waited for price to come back to 1080 points. This is half of 2160. If we mark this 1080. So we exactly opened our position at this point, and we were waiting for price to move down. So this is the point where we were expecting it will extend, and again it will come back to 2160, and likewise it will reach to this point, right? So this was our expectation in the price. So from this point, the movement expected was like this. But what has happened in the price? So after this U-turn, price opened beyond this. So that means next level of action. When price is breaching 1080, we should take our action at this point. So this is the control point where we should take our action. And at this point, we should either close our trade or we get a clue what is the next line of action. So what happened in the price after this point? Only one day it went below, and again it started moving up. 3 days it spent below this control point. That means if we forget about yesterday's movement, if we ignore this candle till this point, it is following all the rules that reversal is 2160. This reversal is 2160 and it is lower low than this low. That is what we have said. But this candle has created something unusual, and I think this is an error which is causing us this much amount of reversal. If we would have understood this in the right time, we might have not entered at this point. We might have entered at this point. And from this, we might have expected a reversal. But now, as we are already in the position, when we are in the position, what is next line of action needed? So what is next line of action? Whatever was the expectation, we are expecting price to come to this point. This is the expectation. When price went against us, at which moment we should close this position? So I'm going to give you the answer for this. So from this point, maximum it can go to 2160. This is bearable, quite bearable. And if you can see, for rest of all the days, it acted like it is controlled within the boundaries, within 2160. And when we waited for one more day, the opening happened gapped up. It was 700 points gapped up. After that, in entire day, it ran for another 900 points. So that means total 600 points move. And so this was a control point. We could not take action on this control point. Now we are sitting in the negative position. And if we want to take an action, so this is the next level of next point where we can actually take an action. In between, with two lines theory, we are handicapped or we cannot take an action. And there are some additional reasons for this. What are the reasons? So if you look into the price, if price moves for 2160, anytime price moves for 2160, it takes an reversal. And if it is on trending side, so if it is trending down,
the reversal always extend below 2160. The reversal always extend below 2160. This reversal did not extend below 2160. Okay. And so what they did, they have created the low, they have created a lower high, and from this point we are in the limit of 2160. At the same time, in reversal also we are in the limit of 2160. So everything was right, and someone taken a control on price, and instead of going down from this point, they have pushed us upside. So that means in this entire up move, if you look into this price action closely, from this point till this point, there was no reversal of 750 points has happened, or there was no reversal of 2160 has happened. That means why it is not marking anything? Mark क्यों नहीं हो रहा है? No. From this point till this point, reversal of 2160 has not happened, and that can give us a chance. So if we reach at this point, from this point we can expect the reversal of 2160. इधर तक तो प्राइस आ ही सकता है. That means we can either close price point जो यहाँ पे हमें मिल रहा था. Now if we are closing our position, we are closing in more loss, and we need to allow price to reach to this point or reach to this point. So as per price action, it looks like if it is following a structure of this, the price will take a sharp U-turn till 2x. That means till upper boundary. That means whatever we were expecting, हम क्या expect कर रहे थे निफ्टी से? If you look into this chart, हमने एक मूव मिस कर दिया है, या हम एक मूव, because market has taken action at -1x, हमने ये वाला मूव मिस कर दिया. ओके, ये चेंज इन स्ट्रक्चर हुआ दिस. सो व्हाट वी वेर एक्सपेक्टिंग, अ शार्प अप मूव फ्रॉम दिस पॉइंट. 51 से जो अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे 4300 पॉइंट का, 4300 पॉइंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, इट हैज हैपेंड इन दिस जर्नी. तो मूव हैज हैपेंड, 4320 होगा कंप्लीट, एंड वी आर नाउ 800 पॉइंट्स अवे टू फिनिश दैट मूव. बट दे हैव डिसाइडेड दिस कंट्रोल लाइन इंस्टेड ऑफ दिस. सो उनको जो करना था वो -1x पे उन्होंने करना चाहा, -2x के जगह पे. सो व्हाट वी शुड डू नाउ, we should wait price to reach to this point. If at this point, if it is crosses above this, क्या होगा? If it is crosses above this, which is highly unexpected, इधर तक जाना is expected है. फिर इधर से जो हम whatever we are expecting this 6000 points fall, we can expect that fall from this point to this point. तो 51,000 तक फिर ये fall आ सकता है. Okay, and then there is some additional manipulation. जैसे मैंने बोला कि इधर कुछ तो गड़बड़ किया है. After this point, if it has taken a reversal, and when we need an additional manipulation to go below 2160, यहाँ से 2160 जाने के लिए we need some additional manipulation. That can happen either including this or at this point. वो अगर होगा तो ही हम 51 के नीचे का सोच सकते हैं. तो फिलहाल हम 50 तक का सोच सकते हैं. So that means whatever we are expecting कि 2 दिन में होने वाला है. तो if you can look into the price, this entire price action has happened within a week, and this has happened within 1 day. तो अगर हम देखेंगे कि ये 1-2 वीक लेने के बाद ये शार्प प्राइस एक ही दिन में हुआ. एंड इफ आई वांट टू ट्रैप रिटेलर्स, आई विल सप्रेस दैट प्राइस एक्शन, और आई विल परफॉर्म सम एक्शन जहां पे फॉल दिखाऊं, एंड शार्प प्राइस नोटिसेबली दिखना चाहिए. So if you look into the Nifty, yes. So if we look into the Nifty, भी निफ्टी का मैं बोलता हूँ, निफ्टी में भी 4 days निफ्टी halted at this point, and then निफ्टी शार्प रन निफ्टी ने ले लिया है. इतना भी शार्प नहीं है. निफ्टी इज नॉट इवन रीच टू -1x. मतलब ये जो येलो बॉक्स है, फर्स्ट येलो बॉक्स तक भी निफ्टी नहीं पहुंची है. यहां से निफ्टी ने रिवर्सल लिया है. तो निफ्टी इज फॉलोइंग सर्टेन डिफरेंट पैटर्न, नॉट इवन -1x पैटर्न. सो दैट मीन्स it has a limit to reach to this point. Once it is reaching to this point, 700 का फॉल भी आया तो it will reach to
7 to 800 के फॉल के बाद इट विल रीच टू दिस पॉइंट, इधर यहां तक आ जाएगा. बट as this 4000 journey is covered without giving a dent, so it gives a power to the price that it can take a reversal of 2160 as well. 2160 का भी रिवर्सल का पावर इसमें आ सकता है. निफ्टी चार्ट मैं दिखाता हूं. निफ्टी चार्ट आई हैव नॉट मार्क. निफ्टी आई विल शो यू. ओके, सो now what is the line of action for us? For us, line of action is we need to wait until this point. जिसमें क्या होगा, as I said yesterday only, when we saw a news, ग्लोबल मार्केट अचानक से रात को मूव हो रहा था. वी सॉ अ न्यूज कि नेक्स्ट दिन अपना भी मार्केट ओपन गैप अप हो सकता है एंड इट कैन रन लाइक हेल. आई हैव आस्क यू टू नॉट टू वॉच द प्राइस. क्या होगा प्राइस को देख के? वी विल get trapped with this impulse. Whatever this FIs want to show us, that impulsive up move, that trend has changed, I do consider this is a noise, or this is an intentional action they have delivered in the market to pull every retailer. So that means we are going to face challenges at these boundaries. Let the price behave at these boundaries, and then whatever profit and loss, if we are closing above this, what is going to change? क्या होगा? तो क्या होगा? So what will change in the structure? So sideways, then price has taken U-turn at -1x, जो कि शार्प नेचर होना चाहिए था, जो शार्प नहीं है यहाँ पे. तो इसके ऊपर क्रॉस होना इज लिटिल डिफिकल्ट. अगर क्रॉस हुआ, then price has to travel to 2x. So we will cover certain points in this 2x, but which is likely impossible. Why? Because it will break the structure. What structure? यहाँ से then price will run for another 8000 point. मतलब यहाँ से 8000 point price जाएगी, तो price is going to break the rule of 6000 points. If so, from this point already they have added some noise. From this point they have added some noise. We are above 6000 points. यहाँ से if price is taken U-turn and 4000, मतलब if suppose this is 2160, this is -1x, then price is traveling to twice the distance of 2160. Then this total distance is 4000 points. अगर ये 4000 points का हो गया distance, so that means from this point we are already away by, कितना हो जाएगा वो, 10-12 हजार, 11 हजार, 12 हजार पॉइंट हो जाएगा, which is not expected from price. Someone has to control price at this point, क्योंकि ये 6480 है. With additional noise it will act as an 6480, and if you want to continue downside, the price can limited come up to 6480. तो प्राइस इधर तक तो आ सकता है, and that is why we are waiting for price to come till that point. Okay, निफ्टी का भी मैं दिखाता हूं इसके बाद, but I hope this structure is clear to you. So that means we have missed this opportunity. एक अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी. ये अगर हमें यहाँ पे if we would have ignored this just because it has crossed in daily as well, डेली में अगर ये नीचे क्लोज नहीं होता तो यहां से ही हम 2160 एटलीस्ट कवर करते. But now as market is supreme, as we know market is supreme, and whatever has happened we have to accept it. So we were expecting a fall, लेकिन now price is against us. So how long it can go against us is approximately these many points. मतलब 3000 points against जाएगी, and we have enough time in hand. Price has to again travel back and at least come to this point. इससे क्या होगा, अगर यहां से प्राइस हैज टेकन रिवर्सल एंड कमिंग बैक टू 54,000, whatever premium we are losing right now, so currently we are losing a good premium. एक का 300-400 हो गया, एक का 500 हो गया, तो 1200 में से ऑलरेडी 800 का प्रीमियम चला गया, राइट? So we will be getting back around 500 to 600 ka premium if price is taking this path. And when we will get to know about this, when the price is reaching to this top, and from this point, if price is closing below 2160, then it is definitely going to create a replica of this move from this point.
ऐसे होगा। और ये जो मूव था इसका रेप्लिका, इफ यू लुक इनटू द प्राइस, यहाँ पे हो रहा है अभी, वो क्लियरली दिख रहा है। So whatever we are expecting at this control point has happened at this control point. That means whatever we are expecting at this point is going to happen at this point now. So this is our current line of action. And if 4,000 points of move has happened without any reversal, that means at least 700 to 2160 का reversal आना बहुत जरूरी है प्राइस में. And that is going to happen to the price. Okay. अब 750 के रिवर्सल में निकलना है कि नहीं निकलना है? एज आई सेड, वॉट एवर वी आर गोइंग टू गेन, वी आर गोइंग, इफ वी आर गेटिंग आउट एट 750, वी मे नॉट गेट री एंट्री, बिकॉज री एंट्री इज एट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट. तो इसका मतलब हम 750 के रिवर्सल पे, आई विल रिकमेंड, वी आर नॉट गेटिंग आउट, वी विल वेट फॉर अगेन दिस बाउंड्री. उसमें क्या होगा, 150-200 का प्रीमियम और चला जाएगा, बट वी विल स्टे इन द ट्रेड, वी विल स्टे इन द डायरेक्शन. If anything is happening at this point, closing above this, then we are going to get next 2x. Then market को स्ट्रक्चर ही चेंज करना है, तो मार्केट स्ट्रक्चर पूरा हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करेगा, बट दैट इट लुक्स हाईली इम्पॉसिबल. 6,000 को ब्रेक करना मार्केट में बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है. एक दूसरी पॉसिबिलिटी है जिसको आई हैव नॉट येट कवर्ड, बट while having yesterday's observation, I thought like this, जो कि होना नहीं चाहिए. अगर वैसा हुआ तो देयर विल बी एन एडिशनल पेन फॉर अस. सो कंसिडर दिस इज 6480 एंड कंसिडर दिस इज अगेन शिफ्टेड 6480. ऐसा अगर उन्होंने कुछ किया, देन वी आर स्टिल फॉलोइंग द स्ट्रक्चर गोइंग डाउन. इसका मतलब इससे भी प्राइस 2160 ऊपर चली जाएगी, बट इट विल क्रिएट अ लोअर हाई. एंड इट इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग अ रूल. रूल का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला यूक्रेन टाइम पे क्या हुआ था. इफ यू लुक इनटू द यूक्रेन चार्ट, दिस इज यूक्रेन चार्ट, ये यूक्रेन है. ओके, सो यूक्रेन में क्या हुआ, प्राइस हैज स्टार्टेड फॉलोइंग 6480. 6480 ये है, एक्सटेंडेड 6480, एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग अप. मतलब क्या है, इट मस्ट मूव लिमिटेड 6480 अपसाइड. लिमिटेड 6480 ये होता है. आफ्टर क्रिएटिंग दिस लो, प्राइस कैन कम बैक टू दिस लेवल, बट यहां पे यूक्रेन वॉर का प्लानिंग हुआ एंड दे हैव क्रिएटेड दिस हाई एंड दिस लोअर हाई. तो फॉर क्रिएटिंग दिस लोअर हाई, दे हैव पुश्ड मार्केट डाउन. ये कितना डिस्टेंस है? इफ यू लुक इनटू दिस, दिस इज 2160 ओनली. This is 2160. This distance is 2160. Suddenly they have stopped price and bring down and they created this lower high. और इसमें अगर नॉइस हम निकाल देंगे, मतलब क्या हुआ, प्राइस में, प्राइस को ऊपर ही जाना था. दे हैव डिलेड दैट बाय एडिंग दिस मैनिपुलेशन. व्हाट दे डिलेड, इसके बाद जो फॉल किया उन्होंने, यू कैन सी दिस फॉल इज लिमिटेड टू 6480 अगेन. And again there is next fall which is again limited to 6480. इसका मतलब जो शार्प नीचे जाना था, इमेजिन इसका रिवर्स मिरर, अगर इसका मिरर हम देखेंगे, नाउ सपोज प्राइस वांट्स टू गो अप और यहां से अप नहीं जा रही है, तो दे हैव क्रिएटेड दिस हाई, मैनिपुलेटेड हाई, जहां से ऊपर भेजा प्राइस को. अगेन दे हैव क्रिएटेड लोअर हाई, जहां, सॉरी, नीचे भेजा प्राइस को, लोअर लो, यहां से नीचे भेजा लोअर लो. तो दिस वाज, इसका अगर हाई हम देखेंगे, इफ दिस इज प्राइस का लोएस्ट हाई, लोएस्ट लो, पहले एलिवेटेड कर दिया, देन क्रिएटेड वन लो which is higher than this, then created another low which is higher than this, then created third low which is higher than this. If I mirror this, मैं इसको मिरर करता हूं, इन्वर्ट, अब प्राइस में क्या दिखेगा, ये हाई बनाया, राइट, नीचे गया प्राइस, लोअर हाई बनाया. इफ आई वांट टू गो डाउन, यहां से लोअर लो मैनिपुलेटेड बनाया एंड प्राइस को ऊपर लेके गया, बट ये हाई नहीं तोड़ा, वापस नीचे ले गया, वापस ऊपर लेके गया, ये हाई नहीं तोड़ा. मतलब क्या किया प्राइस ने, इट वेंट बिलो 6480. इमेजिन दिस,
इट वेंट बिलो 6480 कितने तक? 11,000 तक गया, 10,000 तक। हाँ, इसके बाद इट एक्सटेंडेड अबव 6480, देन इंस्टेड ऑफ कमिंग टू 6480 ये बीच में से ही घूम गया, लेकिन यहां से लिमिटेड 6480 चला गया। दिस इज लिमिटेड 6480 एंड यू कैन शार्प रिवर्सल। अब इसी को मैं करंट सिनारियो से जोड़ रहा हूं। यू कैन सी दिस कुड बी द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी नाउ, जो मुझे जिसको जो हमें कहां पे पता चलेगी? एट दिस पॉइंट। So if I look into the chart, I'll keep this both the charts side by side. This move which is extended 11,000 तक चला गया, right? And then there was a reversal of 7,000. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? Extended 11,000 तक चला गया. Then there was a reversal of 7,000. ठीक है? 7,000. Then someone manipulated this. Then someone manipulated this and bought price like this 480 तक चला गया. बट इफ यू हैव इनफ टाइम, मतलब ये भी मूव देखो, दिस हैज ऑल्सो हैपेंड इन वेरी शार्प मैनर. तो ये भी ब्रेक करके चला गया यहां से यहां आके. दिस दिस इज ऑल्सो गैप अप सेम. अरे ये रेप्लिका ही दिख रहा है क्या? सो यहां से गैप्ड अप लो से इफ वी मार्क फ्रॉम दिस लो, ये कितना मूव गया है? एक दिन में ही गया है, वो भी. वो फॉल था, ये राइज नहीं था, फॉल था. सी अनदर, ये 600 पॉइंट्स का मूव. देन यहाँ पे ओपन हुआ एंड इट स्टार्टेड रनिंग, तो ये भी बाउंड्री उसने ब्रेक कर दिया है. सो एट दिस पॉइंट अगेन, सो इफ वी कंसिडर दिस डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 दिन में इधर तक पहुंच गए हम लोग, नेक्स्ट 10 दिन में, एंड 6,000 कवर हो गया. इसके बाद चेक द फॉल साइज, जो भी फॉल हुआ है. सो द फॉल हैज कम टिल 6480 पॉइंट्स. यहां से पूरा 6480 कवर किया है बाय ब्रेकिंग दिस हाई, एंड दिस हैज हैपेंड विद इन, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट 25 बार में हुआ है. 25 बार या 26 बार, 40 डेज, 40 डेज ऑन पेपर एंड 25 डेज इन हैंड. 25 डेज मतलब अगर हम इमेजिन करते हैं, इफ वी आर गोइंग टू फेस दिस सिनारियो नाउ एट दिस पॉइंट, तो यहां से बिकॉज ऑफ द रिवर्सल, इफ सपोज वी आर कवरिंग 6480, so price will come to this point and it has to come to below 6480. below ही है ना वहां पे? नो, अप टू दिस लेवल ओनली. तो यहां तक आ सकता है 6480, इधर तक भी आ गया, लोअर हाई समझो, ऐसे किधर तक तो आ गया. देन व्हाट वी नीड इज टाइम. सो फ्रॉम दिस पॉइंट 25 days, 25 days is this. डेज में है क्या वो? दिस इज इन डेज. आई विल मार्क दिस इन डेज. सी, दिस इज 30 bars. वी आर एट इन जुलाई ओनली. 38 जुलाई तक, 31 जुलाई तक वी हैव 34 days इन हैंड. सो इधर तो जाएगा एंड इधर से शार्प रिवर्सल भी आएगा. सो वी नीड टू टेक एन वाइज डिसीजन एट दिस पॉइंट. ये पॉइंट पे वी नीड टू टेक दैट डिसीजन. क्या कर सकते हैं इसमें? इधर की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए मे बी वी नीड टू टेक सी अप टू दिस पॉइंट. द मोमेंट वी आर रीचिंग 6480 वी नीड टू क्लोज दैट सी. तब तक पी में जो लॉस होगा, वो जो कवर हुआ है वो हो सकता है. सो वी नीड एडिशनल फंड फॉर दिस. दोज हु डू नॉट हैव एडिशनल फंड, डोंट एंटर. कुछ नहीं होगा. दिस विल बी एन एडिशनल मूव विच विल बी कवर्ड
अगेन प्राइस हैज टू कम बैक टू सर्टन पॉइंट, जो 4000 पॉइंट भी कवर करके आ गया तो आपका पी का लॉस है वो 0 to 0 भी आ सकता है. नॉट टू वरी अबाउट दैट, बट दिस इज व्हाट आई कैन सी इन द प्राइस. व्हाट इज दिस? निफ्टी 50 में फ्राइडे पोजीशन है, व्हाट पोजीशन? पी. एक मिनट, मैंने चैट देख रहा हूं मैं. 28 जुलाई 1 लॉट है. ओके, 23,600. निफ्टी का स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. आई विल कम टू निफ्टी का स्ट्रक्चर. एंड आई, यस नील, आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये रिप्लिका ही है, क्योंकि दिट ऑल्सो सर्व्स, क्योंकि 6480 का रूल ब्रेक नहीं हो रहा है. वी आर शिफ्टिंग अप. जब ऐसा शिफ्टिंग अप होगा, बट देन इट इज प्रेसिडेंटेड, जो इसमें हुआ है ना, बहुत डेंजर होने वाला है. मतलब इफ वी आर मिररिंग दिस, 6480 ऊपर गया है. इफ इट वांट्स टू कंटिन्यू डाउन साइड आफ्टर ब्रेकिंग 6480, ये जब कभी भी 6480 ब्रेक करेगा, इट हैज टू कवर दिस 19,000. ऐसे ही दिखेगा वो. So that means this is shifting up, and then we can, okay, okay, so let me first think about it. So that means this structure clearly shows, we have extended below 6480, and there is some reason. Now we are going to extend again below 6480. Then we will have a fall of 6480. Then we will have a rise beyond this range. It will be still kept below this. So that means the moment 6480 is broken, we need to understand when we can expect this. It should be equal high. What is that? Is it an equal high? Yes, it should be an equal high. If we look into this, so if any equal or higher high, after that we get a break below 2160, break below 2160. ये वाला break 2160, मतलब ये वाला break 2160. If we get an equal high, now we are talking, हम रिवर्सल वाले चैट पे बात कर रहे हैं, बट मुझे ऐसे लगता है इफ वी आर टेकिंग दिस पोजीशन, इक्वल हाई के बाद 2160 का ब्रेक होता है. इफ वी कैन कैच दिस, देन वी आर गोइंग टू कैच. मतलब क्या है, हम जुलाई में हैं. इट इज डिफिकल्ट एक्चुअली, क्योंकि ये कितने महीने में जा रहा है देखो. पूरा 19,000 कैप्चर करने में वी नीड, इट इज नॉट इन लाइक अगस्त जा रहा है, तो एटलीस्ट अगस्त तक वी कैन कवर 6480 या 11,000 का नेक्स्ट डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. और दिस इज व्हाट 9,000 पॉइंट्स. तो एटलीस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन कवर 10,000 का जर्नी, एंड देन शार्प रिवर्सल आए. दिस शार्प रिवर्सल शुड बी 4320. ये कितना है? दिस इज 4320. 4320 के बाद अगेन 2160 ब्रेक करके वी कैन कैच दिस, बट देन ये चैलेंजिंग है. ये कितना है? इसके बाद सारे 4320 आएंगे. गुड. सी इफ वी कैन, ओके, बाय लुकिंग एट द चार्ट, अगर इसको रिप्लिकेट किया तो वी आर गोइंग टू गेट 4320 के रिवर्सल वी आर गोइंग टू गेट, एंड दैट एवरी रिवर्सल विल बी हेल्पफुल फॉर अस. 4320, दिस इज अगेन 4320. सारे रिवर्सल 4320 के आएंगे अगर ऐसा हो रहा है तो.
This is 4320. This is 4320. This one reversal after reaching to 19,000 will be 6480. उतना ही एक डिफरेंस है, बट मुझे लग रहा है इसका ही रेप्लिका कर रहे हैं ये लोग अभी. हेलो. Okay, so this move, what we need as an action plan is C. We need C in this to cover this distance. The moment it is reaching to 6480, we need to close that C. After that, this P we are going to carry, and it is going to give a dent of 6480. So we will try to come back to at least 4,000 or 5,000 points. And whatever might be the position, we need to cut that position in that reversal. And then it is definitely then going to come down. तो जितना भी extend होगा वहां से 6480 limited आएगा ये. And वापस it will go up to create another lower high. ऐसा हो सकता है. We just need an clue at this boundary. इसके ऊपर if price is closing above this, then that is going to happen. ये कंपलसरी तो नहीं है ना कि ऊपर जाएगा ही. कंपलसरी ये लाइन के ऊपर है. सी this we are considering as second plan of action और second line of action ना. पहले क्या हो रहा था? So from this point Q market ऊपर मुड़ा है. We don't have the clue. If this is a replica of यूक्रेन वॉर जो हमने देखा, यूक्रेन वॉर में भी सडनली बीच में ये जो बीच में रिवर्सल आया था ना, अननेसेसरी रिवर्सल था ये. एंड दिस रिवर्सल हैज एडेड दैट एडिशनल 6480 का मूव. सो इफ द प्राइस इज द पर्पस बिहाइंड दिस हायर लो इज सेम, देन कल के दिन में ये बाउंड्री कट होगा. एंड इफ दैट बाउंड्री इज क्लोजिंग अबाउट दिस, हेलो, just a moment. Hello. So if this control point is broken, definitely the next line of action we need to consider. If this is not broken, then we are going to continue like this fall. But as I said, something has happened in the market in the last week, and which is not known before, and that runtime change should have some effect on the market. One thing is good for us that we are carrying July expiry that has more than 30 days in hand. So at least price will cover 6480 and it will be in a partial return journey. That is going to happen to the price. अपसाइड इक्वल हाई तक जाके भी, इक्वल हाई दूर है, इक्वल हाई ये है ना. इट कैन हैव पावर टू ट्रेवल बाय 6480. पहले जंप में वो 6480 थोड़ा सा ऊपर चला जा सकता है, पहले जंप में इधर तक यहां से, एंड देन अगेन इट विल कम बैक टू टोटल 6480. ये पूरा का पूरा उसको रिवर्सल आना है, एंड दैट इज ऑल्सो इन शॉर्ट पीरियड. तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा एंड दिस विल बी लोअर हाई, दिस विल बी लोअर हाई, सॉरी हायर लो, दिस विल बी हायर लो.
एंड देन अगेन वो जा रहा है. आफ्टर दिस इट शुड बी इक्वल हाई. आइदर इधर वाला तो नहीं जाएगा, इसके बीच में कहीं तो इक्वल हाई बनाएगा, जो इस हाई से इक्वल होना चाहिए. देन इट विल कंटिन्यू टू फॉल. ऐसे हो सकता है. लेट मी चेक RSI क्या था इसमें. इट हैज क्रॉस्ड. इधर नीचे से ऊपर गया है ना, ये वाला ऊपर गया है. ये अच्छा खासा ऊपर गया है. सो वी नीड टू डिप्लॉय सी, ऐसा लग रहा है क्लियरली. जिनके पास फंड नहीं है, डू नॉट डिप्लॉय. पैनिक होने की जरूरत नहीं है. लेट द प्राइस ट्रेवल टू दिस पॉइंट. रिटर्न जर्नी हमने यहाँ पे शुरू किया है ना, तो 4000 पॉइंट्स का रिवर्सल भी आएगा. एंड 15 दिन अगर बाकी है तो वी आर गोइंग टू क्लोज दिस विद द लॉस ऑफ 300-400 पॉइंट्स. सो डोंट गेट पैनिक. ठीक है. निफ्टी में मैं जो बोल रहा था, can you show the 15 minutes or 1 hour chart in the NF movement past 3 days? When should have been cut with the SL? Can you show SL? Okay, past. यहाँ पे SL कंट्रोल पॉइंट पे बनता है. दैट कंट्रोल पॉइंट इज नथिंग बट 2160. इधर बनता है SL. If price is closing above 2160 from the low, if this low, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है अगर अपने को, तो यहाँ पे पोजीशन कट करना जरूरी है यहाँ पे. तो फ्रॉम दिस पॉइंट we have built our position from this point, and when it is closing above this, we should cut that position. But what is good in this move, after this point price is running upside. That means in this entire move there is no reversal has happened. So whenever the reversal will happen, it has a potential to cover 2160. That means जहां से भी होगा वो यहां तक प्राइस को वापस लेके आएगा, जो हमारा SL था. तो वी विल वेट फॉर दैट पॉइंट. बट अदरवाइज देयर वाज नो SL गिवन बाय प्राइस इन लाइव मार्केट. इफ डेली क्लोजिंग, इस दिन का डेली क्लोजिंग इसके ऊपर होता, तो उसको SL हम पकड़ लेते. यहाँ पे हम निकल जाते हैं. एंड नेक्स्ट डे वी विल थिंक अबाउट, वी माइट हैव थॉट अबाउट नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन. बट देयर वाज नो SL. We have to reach 57,500 first, and then it can reverse 50. That is what she meant. Okay, Aparna madam is saying upside equal high जा सकता है. Equal high is 57,500. 57,500 इधर तक नहीं. इसको ओके, दैट इज प्लान ए. 57,500 है ना, दैट इज प्लान ए. बट वॉट एवर हैपन इन दिस एक्शन इज नॉट सपोर्टिंग कि ये बाउंड्री तक वो रुकना चाहिए. क्योंकि क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टेम्पररी लो प्राइस हैज गेन पावर कि वो 6480 ऊपर जा सकता है. और वो 6480 ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए हमें, what we need for that, we need a low which is very far from this point, and it will have a scope that price can come back from any high, and limited low भी बनाएंगे तो सारे लो 6480 को शिफ्ट करने में हेल्प करेंगे. दिस इज लाइक दिस वन इज शिफ्टेड 6480.
अब वो जो मैनिपुलेशन हुआ है ना, उसका मीनिंग यहाँ पे मुझे पता तो चल रहा है, बट वी विल वेट फॉर दैट बाउंड्री। उस बाउंड्री के बाद हम सी ले सकते हैं। देन दिस इज अ रैंडम नंबर, बट आफ्टर दैट रैंडम नंबर प्राइस विल अगेन शिफ्ट दिस बाय 6480, and with this shift we are not breaking this high. Again price will come back and shift, मतलब यहां से एक फॉल होगा, जितना भी जाएगा थोड़ा सा छोटा सा एक्सटेंड करके it will come back to 6480, and then it will do like this. तो इसका मतलब like this, and जब ये ब्रेक होगा या इक्वल हाई पे, इक्वल हाई के बाद when it is breaking below 2160, this point we are going to take a trade for 3 months expiring, and this is going to cover approximately 9000 points, मतलब 4000 पॉइंट्स हमें एक पोजीशन में मिल सकते हैं अगर ये हुआ तो। एंड दिस इज व्हाट करंटली प्राइस में चेंज, जस्ट बिकॉज समथिंग हैज हैपेंड इन दिस वीक। अगर ये नहीं होता ना तो हम सीधा नीचे चले जाते, बट यहाँ पे जो है वो उसका रीजन मुझे ये दिख रहा है अभी। ये पीजेड ही है, ये पीजेड शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। व्हेन दिस काइंड ऑफ पीजेड शिफ्टिंग अप, जैसे कि कोविड, दिस इज यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर में वही हुआ। अभी मैं इसको मिरर करता हूँ, नॉर्मल करता हूँ, इन्वर्ट निकाल देता हूँ, एंड आई विल शो यू यूक्रेन वॉर में क्या हुआ था। आई विल रिमूव ऑल दिस। सी, यू कैन क्लियरली सी दिस इज पीजेड। कैसा पीजेड है ये? दिस इज 6480 शिफ्टिंग डाउन। इसको अगर हम कंबाइन कर देंगे इट विल लुक लाइक पीजेड। मतलब इफ वी आर रिमूविंग नॉइस फ्रॉम दिस, नॉइस मतलब क्या, हायर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, एंड देन वी विल गो फॉर वीकली and it will look like 6480 like this. So if I am going to adjust this whole 6480 looks like this, right? And the moment price is closing above this, what gets? It gets an power 1 2, इधर तक जाने का पावर मिलता है। And how long is that? From this point 19,000. So 19,400 तक जा सकती है प्राइस, which is this. तो similarly now we are expecting here ऐसे होगा। This is first shift, तो ये बुलिश साइड है। दिस इज सेकेंड शिफ्ट एंड दिस इज थर्ड शिफ्ट। मतलब ये जो बियरिश वाले थे, राइट, वैसे ये बुलिश ऊपर शिफ्ट होते जाएगा, एंड देन जो ये राइज हुआ है वो यहाँ पे फॉल होगा, लाइक दिस। ऐसा कुछ चार्ट पे दिख रहा है। दिस इज व्हाट विल हैपन। प्राइस विल रिमेन 6480 टिल नवंबर 27, नवंबर 26 इसमें ही रहेगा 6480 में। Sir, can I tell you something? यस, Sir, this price is forming a nice diamond diametric as per Neo Wave.
ओके। तो आपने अभी दिखाया ना वो जो 21 में हुआ था वीकली वीकली चार्ट अभी दिखाया था ना आपने, हाँ हाँ। वैसा ही हो रहा है। ABCDEFG होगा। ओके। तो ऑल द वेव्स विल बी सिमिलर इन टाइम। अभी देखो, द डाउन मूव फ्रॉम 57500 has taken some 4 weeks. हम्म Now the reverse trend, which is actually wave B, also taking almost 4 weeks. हम्म तो आप ABCDEFG कंबाइन किया तो 4 weeks कंबाइन किया तो नवंबर तक जाएगा। हम्म उसके बाद एक शार्प अपसाइड होगा ऑफ 6480, ओके। and then the fall which we saw in March will happen. ओके। This is what I see. So what is going to happen now is the next wave C will be around 6480 price band, हम्म which is all, matching your 2x up and 3x down. ओके। So in July we are going to have a very nice fall. जुलाई में। July में. And this week, that is starting Monday next week, it will be mostly sideways. Bank Nifty. निफ्टी ऊपर जाएगा 24,100 आस के पास जाएगा विथ हेल्प ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो नेक्स्ट वीक वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग। हम्म सो दिस 6480 बैंड विल रिमेन एज इट इज, उतना ही अंदर ही खेलेगा। ओके। तो एवरी मूव विल बी अराउंड एज यू सेड 4320 अप एंड डाउन। वेव सी विल बी लिटिल प्लस, मे बी 5000 6000 आसपास हो जाएगा। हम्म बट जुलाई में 50,000 51,000 टारगेट आएगा ही। ओके। That is why it is keeping you confused. You means we retailers. राइट। So this what I see. It will be confirmed in next 1 or 2 weeks. गुड। Only when wave D is formed, no, we can clearly see that is a diametric is forming. But I am able to see now because that time similarity is there, Sanjay. हम्म You open that weekly chart of this current price structure, Sanjay. वीकली। Weekly chart for this current price structure. That is April, May, June का price. ओके। बैंक निफ्टी का थोड़ा जूम करो उसको ये लाइंस निकाल दूं? और नाइस निकाल दो। इधर EMA के पास प्राइस है ना सर वीकली का, ये वाला। ये वाला। यू सी द रेड बार्स, इट इज टेकन 4 weeks। 1 2 3 4 यस। यू जस्ट पुट द टाइम, टाइम का एक ये है ना सर, हम्म टाइम कैलकुलेट करने का एक प्राइस है ना, वो नहीं सर, नॉट दैट वन। प्राइस एंड टाइम, प्राइस स्क्वायर एंड वाला, रेक्टेंगल टाइम वाला। दिस। हाँ वो फ्रॉम डाउन टू दैट क्लोज ऑफ दैट रेड, यू सी हाउ मेनी 4 bars, राइट? यस। Yes, you see the next 4 bars also, it is concluded with the last week's move. See, by next week, or this week, it is already 4, right? या Or 3. 3। So next week, yeah, that is our upcoming week is the 4th. So that week it will form a nice neutral candle. ओके। So from there, that neutral candle will contain, I think, PZ. So उसके बाद, as you said, no, 1050 PZ or whatever PZ we have to see. Based on that, we have one thing, sir. I'm very clear. I don't know the reason. One thing is SPX 500 of US
if it breaks certain level, there will be a nice correction in US market. So that could be one reason why our market also will fall. But anyway, reason I'm not seeing, but I'm seeing the price. Okay. So this price structure, what you showed just now, 21 में जो weekly हुआ था ना सर, 21 में, 21 में, हाँ, 2021 में, this one, not this one here down. yes. Yes, it will be like that. You see, wave B and wave C is down. C has come down, you see. Then wave, yes. Then D हो गया, E, F, G हो गया. देखो. Correct, no? Yes. This is structure is going to come here now. And this is within 6480. What is this total band you just check, sir? This total? Yeah, this total. This should be 11,000, within 11 to 10,000, because this is multiple 6480s. 8,000. Total, in total it is. So 8,000 is okay, no, sir? Because 8,000 is 8,000 is 6,000 only. additional money put for after 6480. Yes, yes. So it's That is okay. 6480 only. Yes. It's 6480 only. And it says 35 weeks. And one more thing, Sanjay, all PE charts of August and July. All P charts are? PE charts, PE put charts, puts, no? Price chart is reflecting the same chart what I asked us to see in February. Okay. That was the behavior of the PE price chart before March fall. Okay. All prices of March PE price will come very low, like this. What is happening now to our July position? 500 के पास, 600 के पास, 400 के पास आ जाएगा. That means people will accumulate for the next upward journey. Put will go up only if market falls, no, sir? Right. So that is what I am seeing. So these two coincidences I am able to correlate and track. Got it. So actually we are in the right position, but okay, थोड़ा surprises होता है market में. But ये इसको हम जुलाई फर्स्ट 2 वीक्स, मतलब जुलाई 15 के पहले जो भी रहेगा वहां पे काट देंगे. Bank Nifty is going to make low on 25th June. 25th So, June. yeah, last week of June we may have 2160 fall. Okay. उसके बाद it will come in I feel so in July 2-3 weeks. जो market को हिला देगा. Now, as you said, all retailers are going to become bullish. Then the market will turn the other direction. Anyway, market is supreme. We have to see what happens, but this is what I see. Yeah. Understood. And one more thing, Sanjay, this what happened, the fall from top to bottom in the month of March, no? Can you just take a Fibonacci ratio of that? From top to bottom. From top to bottom? Yes. From 61,000 to 48,000 something is there, no? And you see the up move of after the correction, the up move, that pullback which happened, is stopping at 61.8. This one. 0.61 it is stopping, you see. Here, green one. Yes. Here. This one. Yes. That is the clue, Sanjay. In Neo Wave, when the price stops a particular fall, the pullback stops at 61.8. It is going to give you the sign of the wave B, how it will be. Pattern. There are 4-6 patterns are there. Diamond, diametric, then bow tie, diametric. These are all consuming time. It will be within that price band, but it will take a lot of time.
it will trap a lot of people. So this formation is very famous in market. Anyway, let us see. I just wanted to share. Thank you, sir, for sharing. Yes. Because it Akshata? is very difficult to write in chat so much information. हेलो Yes. Yeah, हेलो thank you. Thank you. सर एक डाउट है आप बोल रहे थे ना कि वो 6480 अप टू बियॉन्ड जाके अप टू आ सकता है बट वो फिर 4320 से ही रिवर्स क्यों लिया मतलब हम लोग ऑलरेडी 6480 के ऊपर थे जो डेंट आया था 10,000 11,000 के फॉल के बाद तो वहां से भी नीचे 6480 आना चाहिए था अगर उसको वो अप टू और बियॉन्ड करके एक लेवल तक जाना था तो आए मतलब 4320 पे हॉल्ट लिया है तो इसलिए डाउट लग रहा है कि वो यहाँ पे 4320 का पीजेड ना बना दे 4320 का पीजेड वही एज आई सेड दिस बाउंड्री इज गोइंग टू टेल अस कि वेदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर टू डाउन साइड बट जैसे वॉट एवर मैनिपुलेशन हैपन ऑन दिस वीक और ऑन दिस डे ये नॉर्मल मैनिपुलेशन नहीं था एंड इट वाज अक्रॉस ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स समवन हैज चेंज द प्लान अब भी नहीं लेके जाना है मार्केट उनको नीचे इसका मतलब ये है कि इसमें 6 महीना 8 महीने का डिले कर दिया उन्होंने यहाँ से क्रैश नहीं देंगे यहाँ से रुकाएंगे क्रैश विल बी हैपेंड आफ्टर जो भी मतलब 6 7 महीने बाद जो भी होगा वो रीजन हो सकता है एंड दैट रीजन हैज नो अदर जस्टिफिकेशन प्राइस वाइज हाईली मैनिपुलेट हुआ प्राइस उस दिन या ये मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज सपोज टू कम डाउन टू 6480 एंड ये 4320 भी नहीं है इट लुक्स लाइक 4320 उनको जिस मोमेंटम पे इसको रुकाना था यहां से क्या चाहिए व्हाट इज एक्सपेक्टेड यहां से वी नीड 3 jumps और 2 jumps of 6480 एंड दोज jumps शुड बी नॉट क्रॉसिंग दिस हाई इसका मतलब ये जंप का मतलब क्या होता है इट इज नथिंग बट शिफ्टिंग ऑफ 6480 वाला नेचर चाहिए हाँ ओवरलैप शिफ्ट होके ऊपर ऊपर जा रहा है और ऐसा स्ट्रक्चर मिलने के लिए कहीं पे तो रुकाना है एंड ये जो टेम्पररीली लो बना है इट लुक्स लाइक ये 6480 ब्रेक हुआ है ऐसा यहां से दिख रहा था ना अभी हाँ सो फ्रॉम दिस पॉइंट इफ आई मार्क 6480 ना सारी प्राइस एक्शन उसमें ही अटक जाएगी everything will get stuck within this range and on paper it will look like ऐसा 6480 लेकिन चार्ट में कैसा दिखेगा तो दिस वाज द हाईएस्ट लो तो ऐसे ऐसे करके शिफ्टेड मतलब चैलेंज करके नॉइस ऐड करके ऐसे दिखेगा तो दिस पॉइंट विल बी हायर लोज फॉर्मेशन द डिस्टेंस बिटवीन दिस विल कीप ऑन रिड्यूसिंग एक गो लेगा 2 गो लेगा वॉट एवर बट दिस एंटायर 80% ऑफ दिस प्राइस एक्शन विल बी साइडवेज ऑफ 6480 एंड शिफ्टिंग स्लाइटली शिफ्टिंग अप ऐसे दिखेगा जस्ट बिकॉज ये 4320 नहीं है वो लग रहा है 4320 बट वो अगर 4320 है देन 6480 का जो ब्रेक होगा ना दैट इज गोइंग टू कवर 2 स्टेप ऑफ 4320 ओके या 3 स्टेप 4320 का 2x हाँ 2 या 3 वॉट एवर अगर 3 बोल रहे हैं हम लोग तो यहाँ से भी कंसिडर होके 3 हो सकता है बट एटलीस्ट 2 हम कंसिडर कर सकते हैं तो इट इज ऑल्सो कमिंग टू 6480 का 2 टाइम्स बट एज लाइक योर क्वेश्चन वाज यहाँ पे ही क्यों किया आंसर इज नॉट नोन इधर आने के बाद वी विल गेट द आंसर कि यहाँ पे नहीं करना था उनको क्या करना है लिमिटेड हाई बनाना है तो लिमिटेड मतलब इससे लोअर हाई बनाना है तो ये अगर यहाँ पे नहीं रुकता नीचे रुकता ना तो ऊपर जाने का स्कोप रहता लेकिन उनको एक गो में नहीं करना है मतलब ये लो बनाया लोअर हाई अगेन इक्वल या थोड़ा सा हायर लो बना के लोअर हाई ऐसे करते जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू ब्रेक दिस ये ब्रेक जो रहेगा ना ये ब्रेक दैट शुड लुक लाइक कि इसको भी ब्रेक करके उड़ जाएगी प्राइस मतलब इसको जब तोड़ेंगे ना फोर्स से तो लोगों को लगना चाहिए कि अभी मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है बाद में ये नीचे लाएंगे शार्प और तोड़ेंगे तो लगेगा इसके भी ऊपर स्कोप चाहिए या इक्वल हाई बनाएंगे
and that equal high will be the last trap. जब वो बनाने जाएंगे, जब लोग घुसने जाएंगे, तब वहां से जितना जोर से गिरेगा वो टाइम ही नहीं देगा किसी को. सो वी विल गेट दैट रीजन. तो हमारी जो अभी पोजीशन फंसी है, We आइदर वी. have to wait ना हाँ, 57 वो सी 500 तक. अभी देर इज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज. एडवांटेज क्या है कि दो जुलाई की एक्सपायरी है, तो 200 का प्रीमियम जीरो. जुलाई पूरा जुलाई में जीरो तो नहीं होगा. ओके, इट विल कम टू 150 या जो भी है 200 तक चला जाएगा. पूरा जुलाई 15 तक इट विल रिमेन 200. उसके बाद शार्प फॉल जाएगा, तो वी आर गोइंग टू गेट बैक. अभी कितना 200 या 300 पे आ गया प्रीमियम, तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट हायर प्रीमियम. इसका मतलब अप मूव पूरा होने दो, लेट दैट अप मूव हैपन. जो 6000 पॉइंट्स का है, उसके बाद 4000 पॉइंट का फॉल आने के बाद वी आर गोइंग टू गेट द प्रीमियम डबल. 300 400 का 8 भी हो जाएगा, 900 भी हो जाएगा, तब जाके काटेंगे. इसका मतलब ओवरऑल आफ्टर स्पेंडिंग नेक्स्ट 25 डेज, 20 to 25 डेज, ये प्रीमियम अपने को 700 900 में मिल सकता है. तो वी आर गोइंग टू लूज 300 400 पॉइंट्स. वो रिकवर हो जाएंगे बाद में, लेकिन अब भी जितना देने जा रहे हैं उससे हाफ या उससे 1/3 ही देना पड़ेगा अपने को टोटल प्रीमियम, क्योंकि वी हैव टाइम. और उसके बीच में अगर कवर करना है, तो एज वी नो टुडे कि यहाँ से, ओके, बैंक निफ्टी अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से 6480 तक सी तो कैरी कर ही सकते हैं, और वो थोड़ा एक्सटेंड भी होगा. तो वो कब पता चलेगा 6480 कैरी करना? आफ्टर क्लोजिंग अबोव दिस. द मोमेंट प्राइस इज क्लोजिंग अबोव दिस, वी कैन कैरी 6480. उसमें थोड़ा सा प्रीमियम कवर हो जाएगा, मतलब ये लॉस मेकिंग ट्रेड रहेगा. दूसरा सी वाला ट्रेड में पॉजिटिव बन जाएंगे हम लोग. एंड इट कैन रन अप टू 6480 और एक्सटेंड करना है थोड़ा. क्योंकि क्या करना है, वो एक्सटेंड क्यों करना है? बिकॉज इट हैज टू क्रिएट द हायर लो. 6480 का पूरा रिवर्सल लेने का, इट हैज टू क्रिएट दैट हायर लो. इसलिए वो एक्सटेंड करेगा ऊपर की तरफ. एंड दैट एक्सटेंशन इज नॉट गोइंग टू ब्रेक दिस एज वेल. तो यहां से 6480 तक जाना ही है. ये इसके बाद पता चलेगा आफ्टर दिस. ये जो हाई था ना, उसकी बाउंड्री, मतलब ये पीजेड की अपर बाउंड्री टूटने के बाद पता चलेगा अपने को. बट ओवरऑल स्ट्रक्चर तो मुझे यूक्रेन वॉर में जो मैनिपुलेशन हुआ था वैसे ही दिख रहा है. एंड एज आई सेड, निफ्टी में देखो, निफ्टी में क्या हुआ है अभी. निफ्टी में वी हैव नॉट इवन रीच टू. नंजुंदा सर को भी कुछ बोलना था शायद. नहीं सर. गुड. हेलो. बोलिए ना सर. नहीं, बोलने को नहीं होता, लेकिन अगस्त सितंबर में थोड़ा बहुत गिरेगा करको चार्ट में पता चला सर. अगस्त सितंबर में ज्यादा गिरेगा मार्केट. हाँ 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 हाँ. तो जुलाई बोले ना, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे. हाँ, जुलाई 2015 के बाद तो वो हो जाएगा सर, कैरी हो सकता है. ओके, हम्म. जुलाई लगता है 15 के अगस्त बाद. में बहुत नहीं, जुलाई 15 के बाद वो स्टार्ट होएगा, तो फल गिरने का शुरू हो जाएगा. ओके, तो तब कैरी हो सकता है अगस्त सितंबर तक. ओके, गॉट इट. ये मेरा कैलकुलेशन है. अंडरस्टूड सर. या, ठीक है सर. थैंक यू. हम्म. सो सी, निफ्टी में वी हैव नॉट इवन टच 1x. दिस इज 1x, ये पहले ही मुड़ गया. तो दिस इज अनदर लेवल ऑफ मैनिपुलेशन ये होना. एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी नॉट इन सिंक, मतलब बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी इन दिस एरिया पीजेड, और निफ्टी अभी तक लैगिंग है. इसका मतलब निफ्टी का भी ये जो हाई है, ये तो एग्जैक्ट 2400 का था. दिस हाई वॉज ऑफ साइज, ये डालना पड़ेगा मुझे. दिस इज 2400. तो इसका मतलब यहां से द नेक्स्ट हाई वुड बी 2400. तो 25 तक चला जाएगा. एंड देन फ्रॉम दैट एक्सटेंडेड, इसको एक्सटेंड भी करेगा थोड़ा. देयर शुड बी लिमिटेड. लिमिटेड कितना आएगा? 24, ऐसे कुछ आएगा, इफ वी आर फॉलोइंग ऑल दिस स्ट्रक्चर.
और फिर निफ्टी हैज टू कम टू equal या whatever that should be lower than this, yes, and then the fall will happen. ऐसा हो सकता है. So believe me or not, ये पहले का उनका प्लान नहीं था, but because of some news they have added this challenge and they have delayed exactly जैसे यूक्रेन वॉर में डिले किया था. they have delayed this fall by more than 6 months. मतलब ट्रम्प का इलेक्शन न्यूज वॉट एवर जो भी रहेगा उस टाइम के बाद मार्केट को गिराएंगे, लेकिन अभी उनका गिराने का मूड नहीं है. ना ये हाई ब्रेक करेगा. इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक हायर हाई. हायर हाई. ओके. सो इवन निफ्टी स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस, शिफ्टेड. तो निफ्टी का भी एक बार पल्स चेक कर लेते यूक्रेन वॉर में क्या हुआ था. ये जो है इसको मिरर कर देते, राइट. सो आई विल मेक द मिरर ऑफ दिस. ये ऐसे कुछ हुआ है निफ्टी में. सो दिस वाज लिमिटेड. This is 2400. This is 2400 एंड यहाँ पे 2400 टूटा है. उसके बाद 1600 के रिवर्सल आने के बाद प्राइस हैज कंटिन्यूड 1600 पॉइंट्स लेके. तो दिस इज 1600 पॉइंट्स. दिस इज 1600. दिस इज टू टाइम्स, मतलब दिस इज 160, दिस इज टू टाइम्स. दिस इज अनदर 1600, नॉट इवन 1600. दिस इज 4 जून वाला 1600 एंड पहली बार 24 के बाद 1600 टूटा था, वो वाला फेज ही है. तो निफ्टी में एग्जैक्ट नंबर्स तो फॉलो नहीं कर रहा है, बट स्ट्रक्चर इज लुकिंग सेम. उसके पहले लेकिन अच्छा खासा मूव बना था निफ्टी में. Daily, this is also daily. Higher low, higher low. This is low. This is 4000. This is 4000. तो
निफ्टी में this is too far from this point, so nifty will be lagging. It looks like nifty is lagging. तो निफ्टी को अभी यहाँ से 802 तोड़ दिया ना, 802 फ्रॉम लो, इफ इट इज ब्रेकिंग अबव 802, तो निफ्टी में भी वो कंफर्म हो जाएगा कि सेम पैटर्न विल रिपीट बाय निफ्टी. 802 इज दिस. सो इफ प्राइस इज क्लोजिंग अबव दिस, इट विल डेफिनेटली फॉलो बैंक निफ्टी. जो बैंक निफ्टी में हो रहा है वो निफ्टी में भी होगा. बैंक निफ्टी अगर पहले बैंक निफ्टी इज ब्रेकिंग दिस, देन निफ्टी इज ऑल्सो गोइंग टू ब्रेक दिस हाई. वो क्लियर हो जाएगा. ये सिर्फ लैग कर रहा है, क्यों कर रहा है पता नहीं है, बट दिस इज हाउ स्ट्रक्चर लुक्स लाइक. और कुछ है सर? निफ्टी 50, हाँ निफ्टी 50 चेक कर लिया. बैंक निफ्टी पहले, बैंक निफ्टी विल फॉलो निफ्टी विल फॉलो बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी आगे चलता रहेगा. मींस निफ्टी में बियरिशनेस ज्यादा है. निफ्टी इफ इट इज नॉट क्लोजिंग अबव दिस, तो बैंक निफ्टी विल नॉट क्लोज अबव इट्स दिस हाई. निफ्टी अगर 802 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है ना, तो बैंक निफ्टी भी ये बाउंड्री के ऊपर क्लोज नहीं होगा. तो एज आई सेड, वी डोंट नो द रीजन व्हाई दैट बेंड हैज हैपेंड. तो इस पॉइंट के बाद वी विल गेट एन क्लियर अंडरस्टैंडिंग. जो कल लाइव मार्केट में अपने को पता चली जाएगा. जो डेली क्लोजिंग है, वी नीड डेली क्लोजिंग. इफ डेली क्लोजिंग अबाउट दिस, देन यहाँ से 6480 की जर्नी है, तो यहाँ पे सी ले सकते हैं हम लोग. एंड दैट टू ऑल्सो जुलाई एक्सपायरी यहाँ से कैरी करेंगे. वी विल ट्राई टू गेन सम पॉइंट. व्हेन इट इज रीचिंग टू 6480, वी विल क्लोज दैट पोजीशन एंड 6480 का पूरा रिवर्सल आएगा. तो फॉर दैट वी आर कीपिंग अवर एग्जिस्टिंग पोजीशन, एंड दैट पोजीशन वी विल क्लोज आफ्टर 5000 और 5500 पॉइंट्स फॉल. तो हम लोग 54, एक्चुअली हमारी पोजीशन 54 की है, तो उसका आधा प्रीमियम भी रिटर्न आया तो भी अभी का जो प्रीमियम हमें मिल रहा है उससे ज्यादा ही होगा. तो ओवरऑल 300 पॉइंट या 400 पॉइंट वी मे लूज, बट रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स वी कैन गेन. तो इसमें और 400 पॉइंट ऐड हो सकते हैं जस्ट बाय वेटिंग, एंड वी हैव इनफ टाइम फॉर दैट. ठीक है. तो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन. एनी क्वेरीज? बट अच्छा हुआ आज वी कुड चेक द रेफरेंस ऑफ यूक्रेन वॉर, एंड देन वी हैव प्लान ए प्लान बी एज वेल. ऊपर जाएगा तो वी हैव नाउ लिमिट अंडरस्टैंडिंग कि कितना ऊपर जा सकता है और क्यों जा सकता है. एंड स्टिल एज आई सेड, द स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन सब मैनिपुलेशन हुआ है. तो उसका रीजन आपने को आधा आज मिला है. डेली क्लोजिंग ऊपर हो जाने के बाद वी विल गेट एन 100% कंफर्मेशन दैट इट द फॉल इज डिलेड बाय 6 months, 6 or 7 months, जो भी है. ठीक है. So I'm done from my side. Any queries? Anything? Okay then. Thank you, pirates. आवाज आ रहा है ना मेरा? थैंक यू सर. यस सर. ओके, थैंक यू. मार्केट प्रीमियम मत देखो, जैसे मैंने बोला प्रीमियम मत देखो. प्रीमियम देखोगे तो डर रहेगा, क्योंकि हम वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद करंट एक्सपायरी, लेकिन वी आर नॉट सिटिंग इन करंट एक्सपायरी. और बीच में हमें ये भी कुछ छोटा मोटा मूव मिल जाएगा जिसमें वी विल ट्राई टू कवर प्रीमियम 100-200 फॉल साइड में कवर कर सकते हैं हम लोग ऑन द रिवर्सल्स. तो उसमें भी कवर हो जाएगा थोड़ा. स्टे फोकस्ड. थैंक यू. थैंक यू सर. ओके, बाय देन.